अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है और आज हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइसेस कुछ हैं और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं, मल्टीपल चॉइसेस। ये आपकी बुक चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, नाइन्थ बायोलॉजी, पेजेस 48 टू 49 जो बुक की एक्सरसाइज है उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइसेस हैं जिसमें पहला मल्टीपल चॉइस है क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ। So how we classify or how we group the organisms on क्या basis होती हैं उसकी, तो इधर 4 options given है. How they feed, the features they have in common, how they respire, how they can survive. So it's they are the easy options, so you can easily identify the correct one. So obviously the B is the correct one. So B is the correct option. This one. The features they have in common, as we have read in the grouping part, the classification topic, that we see the similarities in the organisms, and on the basis of the similarities, they were classified in the groups. Next is viruses are assigned to the kingdom. So here viruses are assigned to the kingdom. So this question, okay, there is one more option to come here, none of the above. That is the correct option because viruses cannot be assigned into any kingdom in which are mentioned here, Monera, Protista, fungi. There is no grouping of viruses. That we will get to know later कि ऐसा क्यों है, but viruses किसी भी kingdom में नहीं group हुए, नहीं classified हुए हैं, वो अलग से ही स्टडी किए जाते हैं, उनकी अपनी अलग ही क्लास नेम से, वो अपने ही नेम से उनकी क्लासिफिकेशन, किसी ग्रुपिंग नहीं हुई है किसी भी, और उनकी किसी के साथ कोई सिमिलैरिटीज नहीं है. तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड इज Allium sippa is the scientific name of, so that also we have read. So here, okay, there is, so there are three options actually. Potato, onion, and pea. So the correct option is B, onion. In binomial nomenclature, the first letter of the dash name is capitalized. So इसमें से हम कौन सा name जो है वो capitalized करते हैं? So we go for this option C, that is in your book. It's okay. Let me explain to you from the book first is, so you can know that where it is written in your book. So status of viruses.
So you have to read the viruses part also is given here, status of viruses in your book above the binomial nomenclature. And what is the question? Scientific name. Aluminum Sippa. I have to show you this. So in your binomial nomenclature, you will find the answers for all of these scientific name and all. So the first one is the first thing that you have to remember. The first is genus name, and the second name is of the species. So in binomial nomenclature, the first name is genus and the second is species. So kiska capitalized hoga, that is uh, the genus species. Genus name will be the capitalized. जब इधर जहाँ पे उन्होंने mention किया हुआ scientific name, the first term, so it's written on your book, the first term generic name. So generic name means genus name is always capitalized. Which of the following may be correct way of writing the scientific? That is also one, the easiest one. You know that it is always, if you read this rules of binomial nomenclature, so you will know the scientific name is generally written, usually printed in italics form. So all names should be in italic. If you go with the B option, other two are not the scientific name. So the B, A and B are the scientific name, but equali is not written in italic form, so you can't choose this. So the A option is correct one. So let's check this alum sippa before going. So alum sippa is the scientific name of onion. What's the scientific name of pea and human? So that is also written here. They have given you this table, so you can memorize this. The order. So this order can become as a short question that write the simple classification of human, simple classification of pea. So this is, they start from kingdom, phylum, class. This is from higher to lower level. And if they ask you to write from lower to higher, so you will go from species. If it's from lower to higher, go from species, then genus, family, order, class, phylum, kingdom. And if they ask you to write from higher to lower order, then you go from kingdom to species. So the number 6 is species that are in the same dash are more closely related than. सो द स्पीशीज जो हैं वो किससे जो एक ही सेम फैम में होती हैं वो क्लोज रिलेटेड देन, ठीक है. सो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली टू ऑर्डर. So let's repeat the MCQs one again. So first one is classification means the grouping of organisms on the basis of, so that is the features they have in common. Features they have in common. Second one, viruses are assigned to the kingdom, so they're not assigned to any kingdom. That means it is none of the above or none of the given option. Allium sippa is the scientific name, so it is the scientific name not of potato or pea, it's the scientific name of onion.
In binomial nomenclature, the first letter of the dash name is capitalized. So you have to remember the rules. First is it should all be in italic. Second is the first name is always the generic name, and the second is of species name. So the capitalized letter will be of genus. Second is which is the correct form. So that is all italic. Which one is all italic? The genus and species name both should be italic. And the sixth one is B option, family order. Okay, let's go to the short questions. So the first short question is difference between the modes of nutrition. Your question goes like, let me add the book here so we can go with the question. Okay. Okay, it's taking time in loading. Okay, so these are the short questions. What is the difference between the modes of nutrition of fungi and animals? And the answer to this question is fungi are absorptive in their nutritional mode. They live on organic materials, secrete digestive enzymes, and absorb small organic molecules formed by the digestion by enzymes. So this is, and the difference they're asking you, so you write it like this in comparative way. So fungi are absorptive where animals are indigestive in food and digesting it within specialized cavity. They live on organic material fungi, but they themselves digest food, and they are absorptive in nutritional mode, whereas animals are heterotrophs because they cannot prepare their own food. So these are the difference between the modes of nutrition of fungi and animals. Third, your third short question is relation between taxonomy and systematics. So the branch of biology which deals with the classification is called taxonomy, whereas the branch of biology which deals with the classification and as well also with the traces the evolutionary history of organisms is known as systematics. Question number 5, short question, is the words are the contribution of Whittaker Whittaker, Margulis, and Schwartz. So you can write in this way also, and the way I've answered it yesterday, that Robert Whittaker introduced the five kingdoms classification. So you can mention the year also in 1967. And Margulis and Schwartz modified the Whittaker the five kingdom claसिफिकेशन ऑफ विटेकर. सो विटेकर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और मार्गलेस ने उनको मॉडिफाई किया था. अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ओपन बुक,
आई थिंक दे आर अब पर जाना पड़ेगा. Relate the importance of biodiversity with the ecosystem through examples. So you have to go इसका जो आंसर है वो आपको अपनी बुक में importance of biodiversity में मिलेगा. तो आपका जो पैराग्राफ है importance of biodiversity का वो सारा आंसर है to the long question number 1. इसके बाद question number 2. Explain the aims and principles of classification, keeping in view its historical background. So you will find its answer on aims of classification in the topic in your book. क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल के नीचे जो आपके पास पैराग्राफ्स हैं उनमें से आप एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखेंगे. दे आर सेइंग कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री. सो उसके साथ आप उसका बेसिस प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो 2 गिवन है वो आपका आंसर है इसके लिए. और इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है होल पैराग्राफ्स 2 पैराग्राफ्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे आर द आंसर टू दिस क्वेश्चन. 5 kingdom classification. So what is the answer? The question is explain the base for establishing 5 kingdoms of living organisms. तो उसमें आपने ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमने पढ़ा था, E. Shelton suggested the prokaryote and Robert Whittaker introduced classification. उसके आगे 2 reasons क्या थे. फिर on the basis जो Margulis और Schwartz ने modify किया, that all you will write in this answer to this question. जो fourth है उसके लिए I have mentioned here because I thought we have this is not we have not read it as according to the SMART syllabus. This topic is not given. You have not done it in detail. So this is let's first read it. Status of viruses. पहले उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको आंसर. Let me try this. तो वायरसेस जो हैं बेसिकली उनको ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रखा जाता है ना नॉन लिविंग में रखा जाता है. उसकी रीज़न ये है कि वो उन क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके और दूसरी लिविंग में इसलिए उनको रखा है क्यों कहा जाता है कि उनके पास डीएनए आरएनए भी है, लेकिन अगर उनको वैसे फिजिकली ऑब्जर्व करें तो दे आर इन क्रिस्टल फॉर्म लाइक दे आर डेड. They not respond to anything until they are get into their host body. So उनके पास डीएनए आरएनए है पर वो क्रिस्टल फॉर्म में दिखते हैं, तो ना तो उनको लिविंग कहा जाता है ना ही उनको नॉन लिविंग कहा जाता है. इसलिए ना वो किसी का क्लासिफिकेशन उनकी हो नहीं सकती. वी कांट पुट देम इन एनी किंगडम. तो आपका स्टेटस ऑफ वायरस जो है वो
बुक में गिवन है जो आपको, उसमें उन्होंने यही बताया कि जो बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग पे है और नॉन लिविंग थिंग्स की बॉर्डर लाइन पे वायरसेस आता है, उसकी वजह ये होती है कि वो क्रिस्टलाइन नेचर में है और उनको हम दे आर कंसिडर्ड एज, उसकी वजह से वो नॉन लिविंग कंसिडर होते हैं। उसके बाद वो ए सेलुलर हैं, मींस दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यार ये सेलुलर कि उनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनकी बॉडी में, फिर बट फिर भी स्टिल दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे? बिकॉज दे कंटेन आइदर एन आरएनए और डीएनए। So DNA is a genetic material that makes them to be live, but in nature they are crystalline. uh, they show no activity. So उनके आरएनए और डीएनए जो वो नॉर्मली अनकेस्ड होते हैं इन प्रोटीन कोड, और उनकी रिप्रोड्यूस, बट वो रिप्रोडक्शन ओनली दे कैन डू रिप्रोडक्शन इन द लिविंग सेल्स, so जिसमें वो डिजीजेस कॉज करते हैं। They are not considered as organisms and thus are not included in the five kingdom. Prions and viroids are also acellular particles and not included in the five kingdom classification system. इसी तरह prions and viroids also acellular हैं because they do not have cellular organization, so उनको भी हम classification में add नहीं करते हैं। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यही है जिसमें उन्होंने अब शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्टिफाई व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइव किंगडम। आपने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों एक्सक्लूडेड है। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या है, आर ऑन एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग ड्यू टू देयर क्रिस्टल नेचर, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, दे आर acellular means they do not have the cellular organization yet show some characters of living organisms, means they possess DNA. So what are the causes? Viruses contain either DNA, RNA encased in protein coat. They reproduce only in living cells, where they cause a number of diseases. They are not considered organisms and thus are not included in the five kingdom. वो organism ही considered नहीं होते हैं, तो इसलिए वो किसी भी five kingdom में के classification system में कहीं भी वो fit नहीं होते हैं। So ये हमारी एक्सरसाइज है आज चैप्टर नंबर 3 से रेलेवेंट। एक आपके एक दो फिलिंग द प्लान एमसीक्यूज हैं जो related group of genera. Okay, in which kingdom you can classify unicellular eukaryotes? So in which kingdom you classify the unicellular eukaryotes? ये आप किंगडम्स के चैप्टर में जाएंगे और जब सब टॉपिक में, तो वहां पे आपको इसका मिलेगा ओनली प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा की किंगडम है उसमें जो है क्लासिफाई होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिनको हम सिंपल मल्टी सेलुलर हमने टर्म पढ़ी है, सिंपल मल्टी सेलुलर। अभी मैंने आपको जब एमसीक्यूज करवाया है मैंने तब आपको एक चीज बताई है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम ऑर्डर है किंगडम फाइलम और जो किंगडम ऑर्डर है क्लासिफिकेशन ऑर्डर,
टेक्सोनॉमी हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑर्डर में आपके पास ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है टू मेक द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ human and p as it is in your book. So or you can or they can ask you to write the scientific name of different एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स जिनको आपकी बुक में भी दिया गया है एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे ह्यूमन है, पी है, ह्यूमन इज होमोसेपियंस, पी इज पी सत्वम, and then they have given you the scientific name of onion. So this also, while learning with this chapter, you can memorize the scientific names of different organisms that are given in your book. There are some common also, like mustard in first chapter, also in second I think we have done the scientific names of mustard plant and frog, Rana tegrina. So they can ask you that also. So it can be a short question, can be MCQ. So memorize the scientific names of common organisms. तो हमारा आज चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है. मैंने टेस्ट सेशन आपके साथ करना है मंडे को. उसके साथ हम जो है नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, चैप्टर नंबर 4, cells and tissues. So we will go for that. So अभी के लिए आज हमारा यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे और अब हम मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से. सो अल्लाह हाफिज़.